Salutation to all. Salutation to all. All means God. All means God or Goddess. Uh, the nature of God, the nature of the God is a pure existence, pure experience. Pure means holy, clear, pure experience is the nature of the God. Self-enlightenment is the nature of the God. Self-enlightenment and pleasure, always pleasure, is the nature of the God. So the nature of God is a pure experience, self-enlightenment, and pleasure. Always peerless. Peerless means second to none. Second to none. Adutiya. Adutiya means in English second to none. यहाँ दोस्रो कुनै केही छैन. परमात्मादेखि बाहेक अरू यहाँ कहीँ केही छैन. किनकि God is everywhere. God is everything. Only God is everything. त्यसकारणले परमात्मा भनेको अद्वितीय हो, अद्वैत हो. अद्वैत हो परमात्मा. परमात्मा हो अद्वैत. In English, peerless or second to none. Advitiya. Why we are saying about the God? Because we belong to God. Why we are saying time to time, day by day, mostly every time? Why? Because we belong to the God. हाम्रो सम्बन्ध भगवानसँग छ. हाम्रो सम्बन्ध परमात्मासँग छ. हाम्रो सम्बन्ध ब्रह्मसँग छ. हाम्रो सम्बन्ध शिवसँग छ. हाम्रो सम्बन्ध पशुपतिनाथसँग छ. either we say Pashupatinath, either we say Shiva, either we say God or Brahma, the meaning is the same. अर्थ एउटै हो, मतलब एउटै हो, भन्न खोजेको एउटै हो. चाहे पशुपतिनाथ भनौँ, चाहे शिव भनौँ, चाहे परमात्मा भनौँ, चाहे ब्रह्म भनौँ, चाहे हामीहरूको यथार्थ स्वरूप भनौँ. either our real nature, that is with God. हाम्रो जो सम्बन्ध छ त्यो भगवानसँग हो. मृत्युसँग हाम्रो सम्बन्ध होइन. We have no relation with the death. मृत्युसँग हाम्रो संबंध होइन. मृत्यु से हम लोगों का संबंध नहीं है, हर हालत में नहीं है. मृत्यु जो मरण है, मरण तो शरीर का होता है, भगवान का तो नहीं होता है. डेथ ओनली ऑफ द बॉडीज, बट नॉट ऑफ द गॉड. परमात्मा को मृत्यु होइन. मृत्यु हो शरीर को. शरीर एंड एक्चुअल वास्तव में
In truth, that is confusion. Body, oral, in fact, that is confusion. Like the confusion, as for example, like a snake is confusion. उदाहरणमा जो सर्प हो, डोरीमा जो सर्प हो, snake instead of rope, डोरी को जो भ्रम रूप हो त्यो सर्प हो। सांप जो है वो भ्रम रूप है। इन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द रोप, रसरी जो है, जो रसरी है वो असली है, ओरिजिनल है, ट्रू, ऑलवेज ट्रू। बट द snake in the place of a rope, that is confusion, that is only confusion. So snake dies when we know about rope. जब हामीले रसरीलाई, जब हामीले डोरीलाई जान्दछौँ, सर्पको मृत्यु हुन्छ, अर्थात् सर्पको कुरा हराउँछ। When we remember, when we know about the rope, for example, if we know the rope, then snake dies. Snake does not stay. Like that, if we remember God, if we convert into the God, there is no death, because there is no body. There is no body, so no death. Rope is always truth, like that. God is always truth, greatest truth, सर्वोत्कृष्ट सत्य, सर्वोत्कृष्ट सत्य है परमात्मा, जो मानव का असली स्वरूप है। The main nature, the fundamental nature, original nature of the woman is only God. There is no death, because there is no body. There is no false world. There is no false world. मिथ्या संसार नहीं है। केवल परमात्मा में मिथ्या संसार नहीं है, इसलिए मिथ्या शरीर भी नहीं है, इसलिए मृत्यु भी नहीं है। क्योंकि जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो तो परमात्मा का कर रहे हैं। Who is saying, who is listening, who is realizing, he is God, he belongs to God. So there is no false world, there is no false body, there is no death. So the name of death, that is confusion. भ्रमबाट आएको, संसार भ्रमबाट आएको। World has come from
मिसयुज दुरुपयोगबाट आएको संसार. बिकज युजफुल इज गड. Useful is God. Our actual nature is God. So it is good for all to be as a God. हम लोगों को सुहाता है परमात्मा में रह के रही रहना. परमात्मा में रही रहना हम लोगों का शोभा देता है, क्योंकि हम लोगों का वास्तव स्वरूप है परमात्मा, केवल परमात्मा. ओनली गॉड, द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज प्योर एक्सपीरियंस, सेल्फ इनलाइटमेंट, ऑलवेज प्लीजेंट. गॉड इज प्योरलेस, अद्वैत, अद्वितीय, सेकेंड टू नन, जहाँ दूसरा वस्तु नहीं है, जहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है. डोरी में सांप वास्तव में नहीं है. डोरी में केवल डोरी ही है, सर्प नहीं है. इसलिए परमात्मा में केवल परमात्मा ही है, वहाँ मिथ्या संसार शरीर नहीं है. इट इज ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ. इट इज ग्रेटेस्ट ट्रूथ. इट इज स्पिरिचुअल salvation. Spiritual salvation, आध्यात्मिक मुक्ति, it is called spiritual salvation. इसको आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है. यह है good for human being, all human being of the world, either children, either young people, either old people, all we belong to God. For example, according rope, not snake. The example of rope and snake, best example to know the God. डोरी र सर्पको उदाहरण परमात्मालाई जान्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो. मोस्ट भ्यालुएबल. इट इज सेइङ अफ वेदान्त. यो वेदान्तको बनाइयो. वेदान्त मिन्स कन्क्लुजन अफ वेदान्त. वेदहरूको निष्कर्ष वेदान्त हो. That is Upanishad. Upanishad darshan. Upanishad darshan or Vedanta darshan same. This is the supreme philosophy of the world. No one can cut, no one can against of this version. यो भनाइको विरुद्धमा सज्जन संसारका कोही पनि जान सक्दैन. So this is the way to follow for us to divert into salvation, to divert into spiritual salvation. आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्तिको लागि यही बाटो हो हामीहरूको लागि आजको दिनमा. आज भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 साल महीना श्रावण. श्रावणको 27 गते आज आइतबार. and English date 2024. The name of the month, that is
August 1, that is 11. The name of the day, that is Sunday. According Hinduism, Tithijam, Shravan Shukla Paksha, Saptami Tithi, आदित्य बार, आज रविवार मीन्स आइतवार मीन्स संडे। ये हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी, टाइटल्स अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी। And we are listening and telling through medias, radio Rupandehi, megahertz 102 from Nalparasi, West Nalparasi, Radio Parasi 90.2 megahertz, and from Palpa Tansen, Sarnagar FM megahertz 92.2, and from Butol Mukti FM 95.5 megahertz. This megahertz, why we are saying listening? Because if we are interested to listen this program, this expression program about the God, we can listen in any our leisure time, any time, through YouTube, through Twitter, through online, from any part of the world. We can hear, we can listen. This program is daily program. Daily we should talk and listen. As for example, food we daily eat and digest. Like that, the lesson of God, we should always listen and tell. Now the time is ending. Hari Prasad.